नमस्कार সকল के हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें बोलने वाली हूँ जो कि प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में ही रहेंगे। मैं दोबारा उसको हिंदी बंगाली में एक्सप्लेन नहीं करूँगी, लेकिन हाँ जो इम्पोर्टेंट बात है उसको डिफाइन जरूर करूँगी। सो शुरू करते हैं। तो আজকে আমি এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব, যেখানে আমি কিন্তু ইংরেজিতে একবার করে যে প্রোনাউন্সিয়েশন বা মুখে বলে দেবো সেটা রিপিট করব না, কিন্তু কেন বলছি এর উপকারিতা বা এর তাৎপর্য বা এর প্রয়োজনীয়তা আমি বাংলা এবং হিন্দি দুটো ভাষাতেই আলাদা আলাদা করে বলে দেবো। সো বিফোর দ্যাট প্লিজ ডু লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব টু এসপি লিটারেচার, হিট or click or press the bell icon so that you never miss an updates and stay connected to this literature. If you are new to this channel, please subscribe, and if you are already a subscriber then please do like, comment and share. अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगर आप ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर है तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर करके हमारे साथ जुड़ जाइए और हमें इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, एनर्जी दीजिए आने वाले टाइम में और बेहतरीन तरीके से काम करने के लिए। ठीक है, सो शुरू करते हैं। तो शुरू करছি আমরা। तो पहले मैं ये सारे तो प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में ही रहेंगे, लेकिन मैं बंगाली में ये बात बोल लेती हूँ, फिर हिंदी में। তো আজকে আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করব যে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর একটা নির্দিষ্ট সিলেবাস আমি এখানে আলোচনা করছি, যেটা UPPSC-GDC একটা সিলেবাস, আর যেটা কিন্তু ভারতের আদার্স এক্সামের জন্য কিন্তু কি আমাদের কাজে দেবে, আদার্স অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হওয়ার জন্য, পার্মানেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, ইউজিসি নেট, গেট, JRF, PhD প্রিপারেশন, এন্ট্রান্স এটসেট্রা এটসেট্রা। তো ইংলিশ লিটারেচার নিয়ে পড়াশোনা করে আর এই হায়ার এডুকেশন লেভেলে ক্যারিয়ার তৈরি করতে চাইছে বা চাচ্ছে, তাদের সবার জন্য এগুলো অ্যাপ্লিকেবল হবে। তো এটা আমি প্রিন্ট আউট বের করে হার্ড কপি আমার হাতে আছে, তো সেটা আমি এখন এখানে শেয়ার করতে যাচ্ছি। আর আজকের টাইটেল এবং থাম্বনেইল থাকবে, যে আমি বলে দেবো অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর কতটা তো থাকবেই, গভর্নমেন্ট জব তো থাকবেই সিলেবাস। So subject is English literature and 16th century to 20th century। तो मैं यहाँ पे क्या बोलने वाली हूँ, UPPSC-GDC का जो इंग्लिश के जो सिलेबस है मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मेरे पास हार्ड कॉपी है और मैं इसको बोल रही हूँ कि ये ना सिर्फ आपका इस एग्ज़ाम को सिर्फ इस एग्ज़ाम को स्पेसिफिकली क्रैक करने के लिए नहीं, अपकमिंग UGC नेट, सेट, गेट, JRF एंड इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड कोई भी एग्जाम में हेल्प करेंगे। हायर एडुकेशन हो, मतलब इस टाइप का हायर एडुकेशन लेवल में हो, चाहे स्कूल एडुकेशन के भी आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि ऐसे नहीं है कि हमने बचपन में जो पढ़ा वो अभी काम नहीं आ रहा है, ज़रूर आ रहा है। तो मैं ये यहाँ पे ये बोलने वाली हूँ। एंड उसके साथ साथ मुझे ये भी कहनी है कि आप लोगों को जो टॉपिक कवर हो चुके हैं वो आप क्लिक करके रखिएगा, और जो नहीं हुए हैं वो आप खुद से प्रिपेयर करना शुरू कर दो। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आर ऑलवेज देयर, मल्टीपल रिसोर्सेज आर ऑलवेज देयर, एंड आप खुद उसको सर्च करिए कि अगर मैं पैसों से कुछ कोर्स खरीद नहीं पा रही हूँ तो मैं अपने भलाई के लिए खुद कौन से रिसोर्सेज से अपना फ़ायदा उठा सकती हूँ, अपने काम को आगे ले जा सकती हूँ, वो आप पे डिपेंड करते हैं। सो शुरू करते हैं। मैं जो प्रोनाउंसिएशन करूँगी, जो एक बार मैं बोलूँगी वो रिपीट नहीं करूँगी, बट एक्सप्लेन मैंने कर दी हिंदी एंड बंगाली दोनों लैंग्वेज में। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो আমরা শুরু করছি 16th century to 20th century unit 16th century to 20th century unit 1, that is forms of literature, background to various literary trends and movements. Next, 16th century to 20th century unit 2, Geoffrey Chaucer's prologue to the Canterbury Tales, modern version, John Donne, The Canonization, A Valediction Forbidding Mourning, and The Ecstasy, Andrew Marvell, To His Coy Mistress, Edmund Spenser, Epithalamion, John Milton, Paradise Lost, Book 1, and Alexander Pope, The Rape of the Lock, Canto 1 and Canto 2. Next is William Blake, The Tiger, the Lamb. Next, William Wordsworth, Lines composed a few miles above Tintern Abbey. Next is your Ode on Intimations of Immortality from Recollections of Early Childhood by William Wordsworth. Next is your Samuel Taylor Coleridge, The Rime of the Ancient Mariner and Christabel. Next, John Keats, Ode on a Grecian Urn, Ode to a Nightingale. P.B. Shelley, Adonais, an elegy on the death of John Keats and To a Skylark. Alfred Lord Tennyson, The Defense of Lucknow, Ulysses, The Lotus Eaters. Next is Robert Browning, Last Ride Together, My Last Duchess, Prospice, Dover Beach, Scholar Gypsy, The West Land,
The next is your W.B. Yeats, The Second Coming, Sailing to Byzantium, Prayer for My Daughter, Sima Sini, Digging, Punishment, W.H. Auden, In the Memory of W.B. Yeats, and Muses de Bois Arts, The Shield of Achilles, Philip Larkin, Charge Going, Poetry of Departures. Next is your Ted Hughes, The Thought Fox, Hawk Roosting, and Unit 3 is your Drama, Christopher Marlowe, Dr. Faustus, William Shakespeare, Hamlet, Twelfth Night, John Webster, Duchess of Malfi, Ben Jonson, Volpone, Afra Ben the Rover, Oliver Goldsmith, She Stoops to Conquer, G.B. Shaw, Candida, T.S. Eliot, The Family Reunion, Harold Pinter, The Homecoming, Samuel Beckett, Waiting for Godot, or John Osborne, Look Back in Anger. And Unit 4, Fiction and Prose, Henry Fielding, Joseph Andrews, Jane Austen, Pride and Prejudice, George Eliot, Silas Marner, Charles Dickens, Hard Times, For These Times, Thomas Hardy, Tales of the D'Urbervilles, Joseph Conrad, Heart of Darkness, James Joyce, A Portrait of the Artist as a Young Man, for Virginia Woolf, To the Lighthouse, D.H. Lawrence, The Rainbow, William Golding, Lord of the Flies, Graham Greene, The Power and the Glory, Francis Bacon, Of Truth, Of Studies, Of Adversity, Joseph Addison, The Spectator's Account of Himself, Sir Roger at Home, and Thomas Carlyle, The Hero as Man of Letters, James Stuart Mill, or you can say J.S. Mill, On Liberty, Bertrand Russell, Science and Values and Science and War, within first bracket, from the impact of science on society. And Unit 5, Linguistics. What is it? Descriptive linguistics, generative linguistics, scope and branches of linguistics, sociolinguistics, psycholinguistics, pragmatics, stylistics, language variations, direct register, pidgins, creoles, processes of standardization of language, language typology, major concepts, syntagmatic and paradigmatic, synchronic and diachronic, competence and performance, innate hypothesis. Next is your approaches, linguistic principles and techniques in language teaching, methods of language teaching, grammar translation method, direct method, audiolingual method, communicative language teaching, teaching of language skills, listening, speaking, reading, writing, error analysis, technological aids in language, language testing. Unit 6, Indian writing in English, Taru Dutt, The Lotus, Rabindranath Tagore, Thou hast made me endless, leaves the chanting and singing, I am like a remnant of cloud. Sarojini Naidu, Song of Radha, The Milkmaid, Raja Rao, On the Ganga Ghat and Other Stories. Girish Karnad, Nagamandala, Salman Rushdie, Midnight's Children, Arundhati Roy, The God of Small Things, Anita Desai, The Fire of the Mountain. Girish Karnad is done, Nagamandala. Then Anita Desai, The Fire on the Mountain, Jayant Mahapatra, Hunger, Grandfather, and A.K. Ramanujan, A River, Another View of Grace, Kamala Dash, An Introduction, The Looking Glass. Unit 7, American Literature, Walt Whitman, When Lilacs Lost in the Dooryard Bloomed, Once Self I Sing, Robert Frost, Mending Wall, After Apple Picking, The Gift Outright, Edgar Allan Poe, The Raven, Arthur Miller, Death of Salesman, Herman Melville, Moby Dick, Sylvia Plath, Lady Lazarus, Daddy, and Ernest Hemingway, A Farewell to Arms, Tennessee Williams, A Glass Menagerie, Langston Hughes, The Negro Speaks of Rivers and Harlem. Next, Unit 8, New Literature in English, A.D. Hope, The Death of the Bard, Patrick White, The Solid Mandala, Margaret Atwood, The Blind Assassin, Derek Walcott, A Far Cry from Africa, Ruins of a Great House, Chinua Achebe, Things Fall Apart, V.S. Naipaul, A House for Mr. Vishwas, Ol Soyinka, A Dance of the Forest, Nuigi wa Thiongo, Decolonizing the Mind. Next, Unit 9, Women Writing, Jeanne Rice, White Saragossa Sea, Charlotte Bronte, Jeanne Rice,
Toni Morrison, Beloved, Virginia Woolf, A Room of One's Own, Chimamanda Ngozi Adichie, We Should All Be Feminist, Pratibha Rai, Yajna Seni, Charlotte Perkins Stetson Gilman, Women to Men, Gwendolyn Brooks, A Sunset of the City, Adrienne Rich, Snapshots of a Daughter-in-Law, Binda Nabar, Cast as Women, Chapter 1, Our Women, Their Women. This is the Chapter 1 of Binda Nabar's Cast as Woman. Next, Unit 10, Literature in Translation. Main concept, source, text, target, text, for the foreignization, domestication, equivalence, scopus theory, kinds of translation. Next is your translation theory and practice. Translation studies, Chapter 1 of Adrienne Lefevere's Translating Literature, India, England, France, a post-colonial translation triangle by Harish Trivedi. Translation and Society, The Emergence of a Conceptual Relationship by Daniel Simoini. The Task and of Translators, a Translator by Walter Benjamin. Next is your Sadat Hassan Manto, the Toba Tek Singh, Munshi Premchand, The Gift of a Cow, translated by Gordon C. Rodermill. Next, Vijay Tendulkar, Silence, The Court is in Session, and Fakir Mohan Senapati, 6 Acres and a Third, Gustav Flaubert, Madame Bovary, Fyodor Dostoevsky, Notes from Underground, Charles Baudelaire, The Flowers of Evil, Fleurs du Mal. Unit 11, Literary Theory and Criticism. Bharat Muni, The Natya Shastra, Chapter 6 and Chapter 7. Philip Sidney, An Apology for Poetry. Samuel Johnson, Preface to Shakespeare. William Wordsworth, Preface to Lyrical Ballads. S.T. Coleridge, Biographia Literaria. Book 13, T.S. Eliot, Tradition and the Individual Talent. Ferdinand de Saussure, Nature of the Linguistic Sign. Jacques Derrida, Signature, Sign and Play in the Discourse of the Human Sciences. Louis Althusser, Ideology and Ideological State Apparatus. Ellen Sholto, Feminist Criticism in the Wilderness. Edward Said, Introduction to Orientalism. Homi K. Bhabha, Introduction, Location of Culture. And from the Location of Culture, Gayatri Chakrabarty's Vivek, the Kayanda Subaltern Speak, Richard Carridge, Eco-Critical Approaches to Literary Form and Genre, you can say this. This is all about our UPPSC-GDC Paper 2 English Literature syllabus. That's it for today. Thank you very much and stay connected with this literature. Do like, comment, share and subscribe to this literature. Hit or click or press the bell icon so that you never miss an updates. ज़्यादा से ज़्यादा like, comment, share and subscribe कर दीजिए जुड़िए इस literature के साथ. आने वाले टाइम में हम अगर पेपर 1 से कुछ है इस एग्जाम के तो भी आपको शेयर करेंगे. ঠিক আছে, যদি কোনো পেপার 1 এর কিছু বিষয়বস্তু থাকে তাহলেও আমরা শেয়ার করব আগামী দিনে. আজকে এই পর্যন্তই থাকছে এন্ড অবশ্যই ডু লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব এই ধরনের ভিডিও পাওয়ার জন্য. আর অবশ্যই আমাদের জুন 2026 টার্গেট থাকছে নেট জেআরএফ এন্ড দেন সেট গেট এক্সাম ইজ অলসো देयर আপকামিং এন্ড উই হ্যাভ অ্যানাদার exam BET, and after that Bihar assistant professorship, Jharkhand and many other states has their own permanent assistant professorship government job recruitment, and definitely we will prepare for it and I will inform you for sure. And thank you very much and stay connected to this literature. Do like, comment, share and subscribe. Good night, take care, see you soon. নমস্কার, ধন্যবাদ. সবার সঙ্গে আবারও দেখা হবে এবং আরও অনেক রাজ্যে মানে বিহার, ঝাড়খণ্ড এবং বিভিন্ন রাজ্যে আসতে চলেছে, আমরা সেগুলো নিয়েও আলোচনা করব. আজকে এই পর্যন্তই থাকছে. ধন্যবাদ.